आप सब लोगों को स्वागत है। जो बेंगलोर में चल रहा हुआ जीके जो एग्जीबिशन कृषि मेला है, वहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे किसान क्राफ्ट की तरफ से स्वागत है। तो किसान क्राफ्ट ऐसे है कि जो स्मॉल स्केल या स्मॉल फार्मर्स है, जो फाइनेंशियली थोड़े कम होते हैं, उनके लिए हम लोग उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग मशीन डिजाइन करते हैं। उनके लिए जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका नीड्स को फुलफिल करते हैं। किसान क्राफ्ट में जैसे एग्रीकल्चर में जो आप लोग करते हैं कि बिगिनिंग से लेके एंड तक का जो स्टेज आता है उसमें 5 स्टेज होते हैं। हम लोग जो उसको 5 स्टेज कंसिडर करते हैं और वो 5 स्टेजों में जो भी रिक्वायरमेंट आती है, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनके लिए हर स्टेजेस के लिए हर मशीन्स अपने पास अवेलेबल है। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಿಕೆ ನಡೀತಿರುವ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 2005ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿ। ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 1-2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 600-700 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ। ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ जो ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು। ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 16-17 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಕೂಡ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಡೀಲರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೀಲರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದಾವೆ। ಈಗ ನೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ। ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ISI ಅಪ್ರೂವಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ। ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಐಟಮು। ನಾವು ಇದು 2005ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ISI ಅಪ್ರೂವಲ್ಸು ಇದಾವೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ನೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ISI ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ISI ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ 1-2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿ ಈಗ 600-700 ಐಟಮ್ ಇದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಆ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 202 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ 600-700 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ 5 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ 5 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ। ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಏನೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಗುದ್ಲಿಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಒಂದ್ 10 ದಿನ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡೋರು, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ ತಕ್ಕಂತೆ 2 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ 4 ಅಡಿ ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 5 ಸ್ಟೇಜ್. ಈ 5 ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ 5 ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ಬೈ 1 ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸಿದಂಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ಯಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸೀಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸೀಡರ್ಸ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗಲಿ, ಬಟಾಣಿ ಆಗಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ರೋಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಗೇರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೇರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ. 2 ಬ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಹುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳು, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಇದೇ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪಿಗೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಫೀಟ್ ಗ್ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫೀಟ್ ಗ್ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಜಸ್ ಇರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HP ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ CC ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಟರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ರೋಟರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಮಾಡಲ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರೋಟರಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದು ಸೆಂಟರ್ ರೋಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ರೋಟರಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ರೋಟರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಈಗ 3 ಅಡಿ 4 ಅಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 4 ಅಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಅಡಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಗ 2.5 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೆಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
जैसे मैंने बताया कि फोर्थ स्टेज जो होता है एग्रीकल्चर में वो होता है कि स्प्रेइंग का। स्प्रेइंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्रॉप्स के लिए अलग अलग केमिकल्स को स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो इंसेक्ट्स होती है उसके ऊपर, उसको अवॉइड करने के लिए या उसका खुद का ग्रोथ के लिए, प्लांट का ग्रोथ करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स को भी स्प्रे करते हैं। और वो केमिकल स्प्रे करने के लिए अपने पास अलग अलग ऑप्शंस है। ये जैसे ये देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बैटरी ऑपरेटेड रहता है। इसमें एक बार चार्ज कर लिया, लेके जाया, फील्ड में गए, हम लोग स्प्रेइंग किए, उसके बाद लेके आके दोबारा चार्ज किए, दोबारा लेके गए, तो वो वाला ऑप्शन है। तो ये बेसिकली रन होता है बैटरी से। इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, क्योंकि उसका टैंक कैपेसिटी होता होगा कि 12 लीटर का टैंक आता है, 18 लीटर का टैंक आता है, 20 लीटर का टैंक आता है, तो उसके हिसाब से अपने पास अलग अलग है। और इसमें और एक ऑप्शन जो है वो बेनिफिट है जो कस्टमर्स के लिए, कि कुछ मॉडल्स है, जैसे ये वाला मॉडल, इसमें 12 वोल्ट 12 एम्प्स का बैटरी आती है, और इसमें जो है मोटर है वो सिंगल मोटर आता है। लेकिन ये जो मॉडल्स देखते हो आप, इसमें डबल मोटर और डबल बैटरी है। डबल बैटरी यानी कि 12 वोल्ट और 12 एम्प्स की बैटरी आती है। अभी ये बैटरी स्प्रेयर के बाद अपने पास दूसरा ये ऑप्शन है कि ये पेट्रोल ऑपरेटेड है। इसमें क्या है, पेट्रोल इंजन फिट किया हुआ है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन आता है और 4 स्ट्रोक इंजन भी आते हैं। और इसमें भी अलग अलग मॉडल इसके हिसाब से है कि हम लोग इसका टैंक्स, जैसे 20 लीटर का टैंक आता है, 16 लीटर का टैंक आता है और 25 लीटर का टैंक कैपेसिटी के आता है। और इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन करके आता है। 2 स्ट्रोक में हम लोग, जैसे मैंने आपको शायद पता है कि 2 स्ट्रोक में हम लोग पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स करते हैं, और 4 स्ट्रोक में हम लोग इंजन ऑयल सेपरेट करते हैं और पेट्रोल सेपरेट करते हैं। और ये विथ टैंक वाले ऑप्शन है। अगर हम लोग इसमें जाएंगे ना, तो इसमें विदाउट टैंक वाला है। इसमें आप कोई भी 500 लीटर का, 1000 लीटर का टैंक में आप केमिकल मिक्स करके रख दो एक जगह में, और इसमें आप स्टार्ट करके सक्शन पाइप, ओवरफ्लो पाइप और इसका जो डिलीवरी है 50 मीटर 100 मीटर का लेंथ का होस पाइप डाल के आप इसको स्प्रे कर सकते हो। इसमें अपने पास पेट्रोल ऑपरेटेड के अलावा बाकी इलेक्ट्रिक ऑप्शंस भी है, जो इलेक्ट्रिक पेट्रोल ये सब पेट्रोल से चलने वाले हैं। और फोर्थ जो है वो इलेक्ट्रिक ऑप्शंस वाले हैं। इसमें भी बस करंट से, जो सिंगल फेस करंट होता है जो घर में यूज किया जाता है, वो करंट से ये वाले स्प्रेयर्स मतलब यूज हो सकता है। अब उसके बाद अपने पास ये ऑप्शंस है जो ट्रैक्टर माउंट करते हैं या इंजन माउंट करते हैं। जैसे कि कोई बड़े बड़े फील्ड होता है जो 50 एकड़ है, 25 एकड़ है, 10 एकड़ भी हो, जो भी वो ट्रैक्टर जो भी रखे हुए ना, उनके लिए ये स्प्रे यूजफुल है कि ये वो ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े टैंकर को वो लोग केमिकल टैंक को फिट करते हैं। और ये लोग जैसे क्रॉप होता है कि पोटैटो का क्रॉप होती है, या कोई भी क्रॉप हो सकता है जो बड़े फील्ड में या बड़े एरिया में वो लोग प्लांटिंग करते हैं, उनके लिए ये वाले स्प्रेस यूज हो जाएगा। जैसे बताया कि हार्वेस्टिंग स्टेज में लास्ट स्टेज जो होता है एग्रीकल्चर में, वो हार्वेस्टिंग स्टेज आता है। हार्वेस्टिंग स्टेज के लिए अपने पास कुछ क्रॉप के लिए, जैसे ये रीपर जो देख रहे हो, ये रीपर कुछ क्रॉप, जैसे आप पैडी हुआ, गेहूं हुआ, नहीं तो अपना क्या बोलते हैं रागी हुआ, जो कर्नाटका में थोड़ा बहुत होता है, उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए ये मशीन यूज होता है। इसमें सेम मशीन आता है जो दूसरा क्रॉप, जैसे 1.5 फीट से नीचे होता है, जैसे बंगाल ग्राम होता है या ब्लैक ग्राम्स होते हैं, जो ग्राम्स होते हैं अलग अलग, उनका ग्राम जो होता है, उसके लिए अपने पास शॉर्ट क्रॉप्स के लिए करके अलग मॉडल है जो शॉर्ट क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। ये जो मशीन है वो मेज हार्वेस्टर करके बोलते हैं हम लोग। मेज हार्वेस्टर में जो मकई होती है, जो खेती होती है मकई, ये सिंगल रो में चलता है, जो एक लाइन में हार्वेस्टिंग करती है। ये क्या है, डीजल ऑपरेटेड इंजन बेस्ड है। इसमें 7 HP का डीजल इंजन इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसमें जैसे यहाँ से कटिंग का ऑप्शन यहाँ होता है, ये रोलर के हिसाब से वो अंदर खींच लेता है, और जब बुड्ढे को कट करता है तो यहाँ पे स्टोर करता है। यहाँ पे स्टोर होने के बाद जो बचा हुआ उसका पेड़ पौधा होता है, वो यहाँ से नीचे जाके वो ब्लेड के हिसाब से वो उसको कट करके छोड़ देता है, मिट्टी में मिला देता है। और जैसे ये भर जाता है, जहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे जाके इसको अनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, उसको ओपन करोगे तो ये पूरा एक जगह में अनलोड हो जाएगा। वैसे जहाँ आप आगे करते करते जा सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये इसको हम लोग ब्रश कटर्स बोलते हैं। और ये मशीन, सेम मशीन आप कुछ क्रॉप का हार्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गेहूं हार्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, पैडी हार्वेस्ट में भी यूज कर सकते हो। उसमें ये वाले अटैचमेंट्स आता है जो पैडी गार्ड बोलते हैं हम लोग। ये वाले गार्ड और ये वाले ब्लेड्स, अलग अलग क्रॉप के लिए ये वाले ब्लेड्स हम लोग चेंज करते हैं। और ये गार्ड को हमेशा यूज करना पड़ेगा अगर आप कोई क्रॉप हार्वेस्ट करते हो तो। इसमें भी आप लोग अलग अलग मॉडल है, इसके हिसाब से है कि वो उसका इंजन का सीसी अलग अलग है, HP अलग अलग है, तो उसके, और इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन आते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन भी आता है, जो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये है जो लास्ट स्टेज होता है हार्वेस्टिंग, जो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जो 5 स्टेजेस में,
ये हार्वेस्टिंग स्टेज है जो लास्ट स्टेज होता है, जिसमें ये वाली मशीन यूज होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, वो एंड होता है। तो मैं आपको वाटर पंप के बारे में बताऊंगा। हमारे पास वाटर पंप को पेट्रोल वर्जन, डीजल वर्जन और इलेक्ट्रिक वर्जन तीनों वर्जन में मिलेगा। सो 1.5 HP से स्टार्ट होके हमारे पास 7 HP तक वाटर पंप आपको मिलेगा। ये हमारा पूरा पेट्रोल वर्जन है। पेट्रोल वर्जन आपको इसमें हाई लिफ्ट भी मिलेगा और नॉर्मल आपका जो कृषि होंडा से पानी निकालने के लिए और चैनल से पानी निकालने के लिए 7 से 8 फीट तक आप पानी सक्शन कर सकते हैं और 50 मीटर तक आप पानी छोड़ सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी चाहिए तो हाई लिफ्ट में आएगा। ये हाई लिफ्ट में आपको और भी ज़्यादा उसमें फोर्स मिलेगा। और ये पूरा पेट्रोल वर्जन है। उसके अलावा आपको डीजल वर्जन में आपको 7 HP 6 HP तक ही मिलेगा। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में भी है, इलेक्ट्रिक वर्जन। हमारे पास स्प्रेयर भी अवेलेबल है। ये स्प्रेयर आपको पोमोग्रेनेट में, टमाटो में स्प्रेयर करने के लिए आपको हमारे पास अवेलेबल है। सो 1 HP से लेके अराउंड 3 HP तक हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्जन में और पेट्रोल वर्जन में अवेलेबल आपको मिलेगा। इसमें अलग अलग मॉडल है। वो आपको 50 मीटर से 100 मीटर तक आप उसमें होस ऐड कर सकते हैं। ಹಲೋ, ಇದು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲೀಪ್ ಬ್ಲೋವರ್ LBV 650 3.5 HP மாடல் 6800 RPM. இது லீப் ப்ளோயர் ரப்பர் செடிங்களுக்கு அது இதுக்கெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு, டெஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும் லீப் ப்ளோயர். அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு மாடல் இருக்கு LBV 950 இருக்கு. இது வந்துட்டு 3.5 HP சேம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 63 cc 6800 RPM. இது உங்களுக்கு ப்ளோயர் செடிங்களுக்கு மேலே டெஸ்ட், வீட்டில் இருக்கிற டெஸ்ட், அப்புறமா சாமில் அது இது டெஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் ப்ளோயர். இது வந்துட்டு கிசான் கிராஃப்ட் ஸ்டபல் மூவர். இதுல இன்னொரு பேஜ் இருக்கு. இதுல ஸ்லாஷர் கூட அனுவார். இது வந்துட்டு 7 HP பெட்ரோல் இன்ஜின் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். 1 லிட்டர் போட்டா உங்களுக்கு மினிமம் முக்கால் மணி நேரம் ஓட்டுக்கலாம். இது வந்துட்டு ஜீரோ கல்டிவேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். பாக்கு தோப்பத்தில், தென்னை தோப்பத்தில், மாங்காய் தோப்பத்தில் யார் ஜீரோ கல்டிவேஷன் பண்ணுவாரோ அங்கெல்லாம் பில் வெட்டுறதுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும். இது பில் வெட்டிட்டு அங்கே தூள் தூளா பில்லு செடி எல்லாம் வெட்டிட்டு அங்கே பின்னாலே தூள் தூளா பண்ணிட்டு பின்னாலே விட்டு போவோம். இது ஜீரோ கல்டிவேஷனுக்கு நம்பர் 1 மிஷின். நல்லா யூஸ் ஆகும். இதில் வந்துட்டு 36 பிளேடு வரும், 2.5 அடி அகலம் வரும். 2.5 அடி அகலத்தில் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಟ 3 ಮಣಿ ನೇರ ಓಡೋ. ಇದು வந்துட்டு 7 HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದು ಬಂದು ಲೋಡರು. ಈಗ ಈ ಲೋಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 400 kg ವರ್ಗು ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು. ಮಿನಿ ಲೋಡರ್. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮನೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬಂದು ಅಪ್ ಟು 400 kg ವರ್ಗು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ. ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಈ ತರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4 ಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 400 kg. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 320 kg ವರ್ಗು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 320 kg ವರ್ಗು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 6 HP ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಮು, ಇದನ್ನು 6 HP ಇಂಜಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 2 ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ 6 ಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಸ್ಪೀಡು. ಇದು ಆರ್ಚ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಈ ದಾಳಿಂಬೆ, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು ತೋಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಡಿಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 750 ಲೀಟ್ರು. ಇದು 750 ಲೀಟ್ರು ಕ್ಯಾನು. ಇದು ನಾಜಲು. ಈ ನಾಜಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಮ್ಮಿನೂ ಈಗ ಈ ನಾಜಲ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3, 6, 8 ನಾಜಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 8ನಲ್ಲಿ 2 ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸಪೋಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சுனில் நட்டு, கிசான் கிராஃப்ட் சேல்ஸ் மேனேஜர், தமிழ்நாடு பார்க்குறேன். நம்மளுக்கு கிசான் கிராஃப்ட் விவசாயங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட் மாதிரி பவர் டூல்ஸ் வந்திருக்கு. பவர் டூல்ஸ் வந்துட்டு ஆரிய யந்திரான்னுட்டு. இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி கிசான் கிராஃப்ட் வந்துட்டு பவர் டூல்ஸ் வந்துட்டு ஆரிய யந்திரா. ஆரிய யந்திரில் என்னன்னா மக்களுங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது, இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்னா விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன பொறுப்புக்கு அதுக்கு தேவைப்படுதோ இது வந்துட்டு டெய்லி பேசிஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேசிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட வேக்யூம் கிளீனர் இருக்கு. வேக்யூம் கிளீனர்ல 3 மாடல் இருக்கு. 35 லிட்டர், 100 லிட்டர் 2 மாடல் இருக்கு. இது வந்துட்டு 35 வெட்டு பிளஸ் ட்ரை 2 பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகுது. அப்புறம் ரீசனபிள் பிரைஸ்ல கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்துட்டு உங்களுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு, இல்ல காத்து அடிக்கிறதுக்கு, இல்ல நத்து போல்ட் டைட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். இதுல வந்துட்டு நம்மளது வந்துட்டு 30 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. 50 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஏர் கம்ப்ரஸர் கூட இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட கார் கழுவுறதுக்கு, மாட்டு எல்லாம் கழுவுறதுக்கு, இதுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு ப்ரெஷர் வாஷர் இருக்கு. ப்ரெஷர் வாஷர்ல இருந்து மக்களுக்கு நம்மளுக்கு கிட்ட 6500 ரூபாயில இருந்து 100 பார், 150 பார், 180 பார், 200 பார் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ப்ரெஷர் வாஷர் இருக்கும். நல்லா யூஸ்ஃபுல், நல்லா ப்ரெஷர் வருது, சூப்பரா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பவர் டூல்ஸ்ல ஆங்கிள் ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்கு. ட்ரில்லிங் மிஷின்ல 4-5 மாடல் இருக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளவு சைஸ் வேணும் பிட்டு அந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி சைஸ்ல பிட்ல நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்கு. ஸ்க்ரூ கட்டுறதுக்கு, ஸ்க்ரூ டைட் பண்றதுக்கு இது வந்துட்டு பேட்டரியில ஓடும். நல்லா இது வந்துட்டு லீவ் ப்ளோயர், காத்து அடிக்கிறதுக்கு செக்ஷனும் ஆகும், ப்ளோவும் ஆகும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு சப்போஸ் சாமில்ல அங்கங்க டஸ்ட் இருக்கும், வீட்டுல சின்ன சின்ன பர்பஸ்க்கெல்லாம் காத்து அடிக்கிறதுக்கு லீவ் ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மக்கள் எங்களுக்கு பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்றது, பெயிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் எல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்கிறாரு. அது பெயிண்ட் மிக்சர் பண்ற கையெல்லாம் கையெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும். அதுக்கு தான் இது வந்துட்டு பெயிண்ட் மிக்சர் இருக்கு, மிக்சர் ட்ரில்லர்ட்டு. இதுல ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பெயிண்ட் ட்ரம்ல வச்சுட்டீங்கன்னா பெயிண்ட் கிளீனா மிக்ஸ் ஆகும். உங்க ஒன்றும் ஆகாது, நல்லா யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஹீட் கன், சப்போஸ் இப்போ பைப் எல்லாம் பிளம்பருங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது, ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாம் பண்ணும்போது அது ஹீட் கரெக்டாக சூட் ஆகலைன்னா ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு கிளீனா இது பண்ணல சொருவலாம், அதுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இது செயின்ஸா. நம்ம கிட்ட செயின்ஸா வந்துட்டு 58 சிசில இருக்கு, 18 பார் இருக்கு, 20 பார் இருக்கு, 22 பார் இருக்கு. 3 மாடல் வரும். பாருங்கள் சைஸ் வந்துட்டு செயின்ஸால பெட்ரோல்ல. இது வந்துட்டு டெமாலிஷன் ஹேமர் வரும், இம்பாக்ட் ட்ரில்னு வரும். இதுல நீங்க 26 mm வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். இது ஒன்று என்னன்னா நீங்க ட்ரில்லிங்கும் பண்ணிக்கலாம், அப்புறமா சிப்பிங் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்துட்டு ஆங்கிள் கிரைண்டர்ன்னுட்டு நம்ம கிட்ட ஆங்கிள் கிரைண்டர் 4-5 மாடல் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஆங்கிள் கிரைண்டர் இது வந்துட்டு மார்பிள் கட்டர்ன்னுட்டு, மார்பிள் டைல்ஸ் கட் பண்றதுக்கு, மார்பிள் கட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். இது வந்துட்டு அதே மாதிரி உட் கட்டர் வேணும்னா இங்க உட் கட்டருக்கு அது இது கார்விங் பண்றதுக்கு அது இது எல்லாம் பண்ணுவார்ல, அவர் யூஸ் பண்றதுக்கு இது சரியான யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி மக்களுங்களுக்கு கம்பி மோல்டு போடும் போது, கான்கிரீட் போடும் போது எல்லாம் கம்பி கட்டுவார். கம்பி கட்டும் போது கம்பிங்களை எல்லாம் கட் பண்றதுக்கு இது உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும், இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி வெல்டிங் மிஷின், வெல்டிங் மிஷின்ல உங்களுக்கு ஸ்மால் கேரி பண்ணிட்டு போற மாதிரி உங்களுக்கு 200 மாடல் இருக்கு, 200 மினியன் இருக்கு, 250 AN இருக்கு. அதுல நம்ம கிட்ட 2 டைப் இருக்கு, மாஸ்ஃபெட் இருக்கு, இந்த மாதிரி வெல்டிங் மிஷின் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின் கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட பெருசு. இப்போ கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாரு இல்ல, அவருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. ಇದು ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ವೆರೈಟಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಒಣ ನೀರ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 50%, 50% ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಲೇಬರು ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ರಷ್ಟು 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಬೆಳೆ ಇದು. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 65 kg ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 25 kgಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಈಗ ಮಲ್ಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ವೆರೈಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು. 70ರಿಂದ 75 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು.
ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇರೋಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು. Thank you for visiting Kisan Craft stall, and for more details please subscribe the channel.